शाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायाम् अथेकोनविंशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच कृत्वा दक्षसुतादानं यौतुकं विविधं ददो हराय सुप्रणक्ष दिज्वेभ्यो विविधं धनम् अच्छं भूमुपागत्य समुत्थाय कृताञ्जलि सार्धं कमलयाचेद अमुवाच गरुड्ध्वज। विष्णुरुवाच देवदेव महादेव करुणासागर प्रभो त्वं पिता जगतां तात सती माताखिलस्य च युवां लीलाव अवतारो वै सतां क्षेमाय सर्वदा खलानां निग्रहार्थाय श्रुतिरेषा सनातनी सिनग्धनीला नीलाञ्जन श्याम शोभया शोभसे हरा दाक्षयन्या यथा चाहं प्रतिलोमेन पद्मया देवानां वा नृणां रक्षां कुरु सत्या अन्यासतां संसारसारिणां शम्भो मङ्गलं सर्वदा तथा य एनां साभिलाषो वै दृष्ट्वा श्रुत्वाथवा भवेत् तं हन्या सर्वभूतेश विज्ञप्ति प्रीति मे प्रभो। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचो विष्णुर्विहस्य परमेश्वर एवं स्थितवती सर्वज्ञ प्रोवाच मधुसूदनम् स्वस्थानं हरिरागत्य स्थित आसीन मुनीश्वर उत्सवं कारयामास जुगोपचरितं च तत् अहं देवी समागत्य गृहोक्तविधिनाखिलम् अग्निकार्यं यथोद्दिष्टं कार्ष च सुविस्तरं तच्छैव यथाविधि प्रहष्टवत् अग्ने प्रदक्षिणं चक्रे मदाचार्य जागया तदा महोत्सवस्तत्रादुतो भूदद्विज सतं सर्वेषां सुखदं वाद्यं गीतनृत्यपुरासरं तदानीमद्भुतं तत्र चरितं सम्भूदति सुविस्मयङ्करं तात तिच्छृणु त्वं वदामि ते दुर्येक्या शाम्भवी माया तया सम्मोहितं जगत् सच्चराचरमत्यन्तं सदेवासुरमानुषं योऽहं शम्भुं मोहयितुं पुरेशं कपटेनः मा च तं शङ्करस्तात मोहयामास लीलया इचेत परापकारं य स तस्यैव भवेत् ध्रुवम् इति मत्वा उपकारं नो कुर्यादन्यस्पुरुषा प्रदक्षिणा कुर्वन्त्या गृहे सत्यापद्वयम् आविर्बभूव वसनात् द्राक्षमहं मुने मदनाविष्टचेताक्ष भूत्वाङ्गनीवलोकयम् अहं सत्याद्विश्रेष्ठ शिवमाया विमोहिता यथा यथाहं रम्यानि वयक्षगानि कौतुकात् सत्या बभूव सन्निष्ट कामार्तो हि तथा तथा अहमेवं तथा दृष्ट्वा दक्षजां च पतिव्रतां सम्राविष्टमना वक्त्रं दृष्टो कामो भवं मुने न शम्भोर्लज्जया वक्त्रं प्रत्यक्षं च विलोकितं न चासा लज्जयाविष्टा करोति प्रकटं मुखं ततस्तदर्शनार्थाय सदुपायं विचारयन् धूमघोरेण कार्मार्तो कार्शं तच्छतता परम् आद्रेण धनानि भूरिणि श्रिप्त्वा तत्र विभावसो स्वल्पाज्यहुतिविन्यासादाद्रव्योद्वस्तथा प्रादुर्भूतस्ततो धूमो भूयास्त्रत्समन्तता तादृग्येन तमोभूतं वेदि भूमि विनिर्मितं तमोधूमाकुले नेत्रे महेशा परमेश्वरा हस्ताभ्यां छादयामास बहुलीलाकरा प्रभु ततो वस्त्रं समुत्क्षिप्य सती वक्त्रमहं मुने अवेक्षं किल कार्मार्थ प्रहेष्ट नानातरात्मना
मुहुर्मुहुरं तात पश्यामि संसति मुखम् अथेन्द्रिये विकारं च प्राप्तवानस्मि सोवशा मम्रेता प्रचस्कन्द ततस्तदीक्षणा दद्रुतं चतुर्बिन्दुमितं भूमौ तुषारच्य समीभमा तपोहं शङ्कितो मौनी तत्क्षणं विस्मितो मुने आच्छाद्य समतद्रेतो यथा कक्षित् बुबोधना अथ तद्दक् वाञ्छम्भुर्ज्ञात्वा दिव्येन च चक्षुषा रेतो वक्स्कन्दनाथस्य कोपादेद्युवाचः रुद्रुवाच किमेतद्विहृतं पाप तव्या कर्म विगर्हितं विवाहे मम कान्ताया वक्त्रं दृष्टं रागता त्वं वेतसि शङ्करेणेतत् कर्म ज्ञातं न किञ्चन त्रैलोक्येऽपि न मे ज्ञातं गूढं तस्मात् कथं विदे यदि किञ्चित् तिषु लोकेषु जङ्गमं स्थावरं तथा तस्याहं मध्य गोमूढतैलं यत्तिलान्तिकं ब्रह्मवाच इत्युक्त्वा प्रियविष्णुर्मा तदा विष्णुवच्चास्मरन् इष्येषः हन्तु ब्रह्माणं शूलमुद्मय शङ्करा शम्भुनोधमिते शूले मा च हन्तु तिदोषितं मरीचि प्रमुखास्ते वै हाहाकारं च चक्रिरे ततो देवगणा सर्वे मुन्यक्षाखिलास्तथा तुष्टुः शङ्करं तत्र प्रज्वलन्तं भयातुरा दिवौचु देवदेव महादेव शरणागतवत्सला ब्राह्मणा रक्ष रक्षेश कृपां कुरु महेश्वरा जगत्पिता महेश्वं जगन्माता सतीमता हरिब्रह्मादये सर्वे तप्तासासुरो प्रभो अद्भुताकृतलीलस्त्वं त्वमाया अदुत्ता प्रभो तया विमोहितं सर्वं विना त्वदक्तिमीश्वरा ब्रह्मवाच इत्थं बहुतरं दीना निर्जरा मुनयक्षते तुष्टुर्देवदेवेशं क्रोधाविष्टमहेश्वरं दक्षमेवं मेघमिति पाणिमुद्म्य शङ्किता वारयामास भूतेशं क्षिप्रमेत्य पुरोगता अथाग्रे सङ्गतं वीक्ष्य तदा दक्षं महेश्वरा प्रत्युवाचा प्रियमितं संस्मरन् प्रार्थना हरे महेश्वर उवाच विष्णुनामेति भक्तेन यदिदानीमुदीरितं मयाप्यङ्गीकृतं कर्तुं तदिहैव प्रजापते सतीं यसाभिलाषसन् वीक्षेत वधतं प्रभो इति विष्णुवच सत्यं विधिं हत्वा करोमयम् साभिलाष कथं ब्रह्मा सतीं संवलोकयत् अभवत्यक्तरेतास्तु ततो हन्मीकृतागसं ब्रह्मवाच इत्युक्तवती देवेशे महेशे क्रोधसङ्कुले चक्रम्प्रिरे जना सर्वे सदैव मुनिमानुषा महाकारो महानासीदोदासीन्य च सर्वशा अभूवं विक्लोतीव तदाहं तद्विमोहिता अथ विष्णुर्महेशात् प्रिये कार्यविचक्षणा तमेवं वादिनां रुद्रं तुष्टाः प्रणता सुधी सतुत्वाच विविधे स्तोत्रे शङ्करं भक्तवत्सलम् इदमुचे वार्ययस्तं क्षिप्रं भूत्वा पुरासरा विष्णुर्वाच विधिं न जहि भूतेश स्रष्टारं जगतां प्रभुम् अयं शरणगस्तेभ्य शरणागतवत्सला अहं ते प्रियो भक्तो भक्तराज इति रिक्ता विज्ञप्तिं हृदि मे मत्वा कृपां कुरु ममोपरि अन्यच्च शृणु मे नाथ वचनं हेतुगर्भितं तन्मनुष्व महेशान कृपां कृत्वा ममोपरि प्रजा संस्रष्टुमयं शम्भो प्रादुर्भूतश्रतुर्मुखा अस्मिन् हते प्रजा स्रष्टा
नासत्यन्यप्राकृतोऽधुना सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि करिष्याम पुनः पुनः त्रयो देवा वयं नाथ शिवरूपो त्वदाज्ञया एतस्मिन् हते शम्भो कस्त्ववत्कर्म करिष्यति तस्मान् वध्यो भक्ता सृष्टिकृल्य कृतिभो अनेनैव सती कन्या दक्षस्य च शिवा विभो सदुपायेन वै भार्या भवदर्थे प्रकल्पिता भमुवाच इत्याकर्ण्यमहेशस्तु विज्ञपति विष्णुना कृतां प्रयुक्त्वाचाखिलांस्ताक्षं श्रावयक्षं दृढव्रता महेशुवाच देवदेव रमेशान विष्णुमत्तप्राणवल्लभा न निवार्य मातात वदादस्य खलस्त्वयं पूरयिष्यामि विज्ञप्तिं पूर्वान्ते कृतां मया महापापकरं दुष्टं हनं मयेन चतुराननम् अहमेव प्रजास्रक्षे सर्वास्तिर्चरा अपि अन्यं स्रक्षे सृष्टकर्मत्वा अहं स्वतेजसा हत्वेन विधिमेवाहं स्वपनं कुर्यन् कृतं स्रष्टारमेकं स्रक्ष्यामि न निवार्यमर्ष मां ब्रह्मवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा गिरीशस्याय चाच्युयता स्मितभिन्धहृदये पुनर्मवमितिरयन अच्युत्वाच प्रतिज्ञापूर्णं योग्यं परस्मिन् पुरुषे अस्ति वै विचारस्व वध्यस्य भवत्यात्मनि न प्रभो त्रयो देवा वयं शम्भो त्वदात्मान् परा नहि एकरूपानभिन्नाक्ष तत्त्वता सुविरा चारय ततस्तवदर्शनं श्रुत्वा विष्णुस्वातिप्रियस्य स शम्भुरुचे पुनस्तं वै ख्यापयनात्मनो गतिं शम्भुरुवाच हे विष्णुस्वर सर्वभक्तेश कथमात्मा विधिर्मम लक्ष्यते भिन्न एवायं प्रत्यक्षेनाग्रतस्थिता ब्रह्मवाच इत्याप्रतो महेशेन सर्वेषां पुरस्तदा इदमुचे महादेवं तोषयन् गरुध्वजा विष्णुर्वाच न ब्रह्मा भवतोऽभिनो न त्वं तस्मात् सदाशिवा न वाहं भवतोऽभिनो न मत्वं परमेश्वरा सर्वं जानासि सर्वज्ञ परमेश सदाशिव मन्मुखादखिलात् सर्वं सक्षां वयतुमिच्छसि त्वदाज्ञा वदामीश शृण्वन्तु निखिलासुरा मुन्यक्षा परेशैवं तत्त्वं सन्धार्य स्वं मना प्रधानस्य भागाभागस्य रूपिणा ज्योतिर्मयस्य भागास्ते वयं देवा प्रभो स्त्रयकस्त्वं कोऽहं च को ब्रह्मा तवैव परमात्मना अशन्त्रयमिदं भिन्नं सृष्टिस्थित्यन्तकारणं चिन्तयस्वात्मनात्मान स्वलीलाधृतविग्रह एकस्त्वं ब्रह्मा सगुणो हांशिभूता वयं त्रय शिरोग्रीवादिभेदेन यथेकस्यैव वर्ष्मणा अङ्गानि ते तथेशस्य तस्य भागत्रयं हर यज्ज्योतिरभ्रं स्वपुरं पुराणं कूटस्थमव्यक्तमनन्तरूपमा नित्यं च दीर्घादि विशेषणाधेर्नं शिवस्त्वं तत् एव सर्वमा ब्रह्मवाच एच्छुत्वा वचस्तस्य महादेवो मुनीश्वरा बभूव सुप्रनक्ष्ण जघान स मातता इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां द्वितीये सतीखण्डे सतीविभाष शिवलीलावर्णन नामेकोनविंशोऽध्याय। ओम नमो शिवाय।